Wait, I'm taking the photo. Cheers. Yeah. We'll see. It will make the one day out. That's a bullet hole. AK bullet. Jack. That's my welcome to Mekong River. Good morning guys. So अभी हम निकल पड़े हैं towards कैलमट ब्रिज बिकॉज रीयूनिफिकेशन डे की वजह से आगे बहुत जाम है. तो लकीली हमें थैंक्स टू गॉड कि मिल गए भाई ड्राइवर साहब जो हमें कैलमट ब्रिज तक तो ले जा रहे हैं. उसके बाद हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा टिल द मीटअप पॉइंट जो कि अराउंड था 10 minutes वॉक. सो गुड लक टू अस एंड लेट्स सी चूची टनल एंड मेकॉन्ग डेल्टा. हमने ये पूरा टूर बुक किया था गेट योर गाइड से. सो लेट्स सी इफ इट्स गोना बी गुड और नॉट सो वर्थ इट. Yes, Mario. You can call me Super Mario. That's Yes. Super Mario. Driver, his name Luigi. Hello. Luigi, he the best driver in Saigon. Luigi, can you stand up and turn around? No. Namaste. Namaste. नमस्ते. सो हमें 1.5 घंटा लगने वाला था चूची टनल पहुंचने के लिए, लेकिन उसके पहले हम रुके थे एक जगह जो कि है हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री. जो वियतनामीज वॉर में घायल हो गए थे या डिसेबल हो गए थे उनके बच्चे, वो सब मिल के ये फैक्ट्री चलाते हैं. इट्स ऑल हैंडमेड एंड इट्स सो ऑर्गेनिक कि वो डक के शेल से और सी शेल से ये सब बनाते हैं. जस्ट हैव अ लुक, यू विल बी मेस्मराइज्ड. एंड इट्स डेफिनेटली नॉट दैट एक्सपेंसिव. अगर आप कुछ सुवीनियर के हिसाब से भी ले जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस यू कैन टेक समथिंग फॉर योर वॉल और एनीथिंग. लाइक दे इवन मेक बाउल्स एंड चॉपस्टिक्स पे भी इनके क्राफ्ट इतने अच्छे हैं. वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज दैट्स नॉट अलाउड, बट यहाँ आप देख ही सकते हैं. इवन पॉलिशिंग भी हाथ से की जाती है. एंड लुक एट दैट ब्यूटिफुल शाइन. Can you stand it together here? I would like to take a group photo for you. Okay? If you get lost, I will show your picture to the policeman. फाइनली हमारी एंट्री हो गई है. नाउ वी आर गोना एक्सप्लोर द चूची टनल. हियर वी गो. ये टनल्स एक्चुअली इंडो चाइना वॉर के टाइम बनाए गए थे, बट इनका एक्चुअल यूज हुआ है वियतनाम वर्सेस अमेरिका के वॉर में. So when we go here to over here, it's small like that. We get through this one, we can sit down right here holding the gun. If someone try to get down there, they take time. We shoot them from here. Okay? When we get through, we come up here, put the gun there, shoot some guy at the truck. You look at this. Shoot at the truck. Get down, run in there. Waiting over there. If they come here check, we shoot them again in there. And if you see some people are trying over there. Yes, some people are trying over there. You see that? We will come there waiting. If they come here, we can surprise, come up, shoot fire the whole team here. They don't know where exactly we go up. You understand? It could be everywhere. Alright. ये टनल्स 250 किलोमीटर्स फैले हुए हैं. और ये जंगल जो आप देख रहे हैं, पहले ये बंजर ज़मीन थी. जंगल तो अब हुई है. ऐसे ही सोल्जर्स चुपके से आते थे और फायर करके निकल जाते थे यूएस आर्मी पर. दिस इज़ अ ट्रैप जिसके अंदर आप देखेंगे स्पाइक लगे हुए हैं. और ये जो स्टोन आप देख रहे हैं, ये स्टोन नहीं, ये क्ले है. धूप से इतना सख्त हो गया है कि किसी पत्थर से कम नहीं. और जब यूएस सोल्जर्स बॉम्बिंग करते थे तो हार्डली कुछ मीटर तक डिस्ट्रॉय होता था, जैसे कि लेवल 1. इसलिए आज तक चूची टनल हम आके देख सकते हैं. You keep going 500 meter. It connects to the Saigon River. Next to Saigon You see on the Google map now we are near the river. The tunnel system
it always have one tunnel connect to the river. But for what? You look at this, for example, this is the ground and we digging. Dig. Okay, after that, a lot of stuff, soil, we put here. They know. The long river, that's the place we they hide the soil there. They throw on the dirt. You watch Shawshank Redemption. You see the guy escaped the prison. No one knows because he know how to hide the soil. Vietcong built 250 kilometers of tunnel here, big mountain of dirt, and the long river help them to hide the soil. You understand? The tunnel 200 kilometers made by this one. Actually, it's a long one, but when we stay in tunnel, we make short one and we can dig the tunnel by this one. 200 kilometers. This one to show the soil. आपको लग रहा होगा ये एंट्स का घर है, बट ये इनका एयर होल सिस्टम है. यहाँ से ये ब्रीथ कर सकते हैं एयर. Isn't that excellent? Vietcong, they connect air hole to the thermal. American, when they cannot go internal over there, they try to go to the ground to find out the air hole. Hole like that is everywhere. Fake hole, real hole, which one? How can they find? They have the sniff dog. You know, sniff dog run around to smell the real hole. Vietcong, they need to do something. They go to some village around here. They took the sock, underwear, armpit, smelly from the people. The Vietnamese style Vietnamese. They stick inside the air hole. They stick in fake hole, real hole everywhere. And it confuses the dog. You understand what I mean? Yes. Yeah, it makes them run to the village. Okay? That's a bullet hole, AK bullet. वियतनामीज जिससे अमेरिका को शूट करते थे. Everybody, the Vietcong, after, destroyed the tank here in 1970, the people here recycle the tank. The chain, you look at the chain, they took the chain piece by piece and then they melt them to make the metal spike. And then they set up in the hole. When American run, step into the hole, step into the spike from the hole. Oh. You understand? Yeah. Now follow me, we will see. They activate and open the window. Spy will keep the thigh, the leg of the soldier in the middle. The next one, we call this is the folding chair job. When the guy step in here, folding chair like a fold chair, it folded. And it hurt one to left leg, one to the right leg of the soldier. The next one is the same like the first one with four spine. When the guy fall down, four spine together, falling down, you will see. It will make the one there automatically hit to my. And this is the door trap at some local house. We set up door trap when they open, it falling down to hurt them. But sometimes they can use the arm or the gun to stop it. But the second part, they still keep moving to hurt them under the body. If you look carefully to the spine over here, you will see it look like the fish hook. Why? Because when it gets stick to the flesh of the soldier, they take it out and not it hurt them one more time. They break it and bring to the bay for doctor surgery slowly to take it out. I always have a sheet on it to make infection when it go deep in the body of the US soldier. This is the life of Vietcong under the tunnels. Behind you can see 250 kgs of bomb shell. There's a shooting range nearby. अगर आप यहाँ आ रहे हैं और आपको कुछ सुवेनियर के लिए चाहिए तो आप ले सकते हैं, एक्सेप्ट द बुलेट्स, बिकॉज जब आप एयरपोर्ट जाएंगे टू फ्लाई बैक टू योर कंट्री तो ऑब्वियसली वहाँ के ऑफिसर्स आपको वो सुवेनियर लेने जाने नहीं देंगे. सो या बाकी चीज़ें आप ले सकते हैं. यू कैन बाय बुलेट्स, शूट बुलेट्स.
And yeah, that's the souvenir shop you see. Refreshment section. Take a light break and we move on. ये ज़रूर ले क्योंकि यहाँ पे बुलेट रेंज की जब शूटिंग हो रही है, भले आप नहीं कर रहे हो, but that's very very loud. Yeah, you can hear that. So do take this, wear it. It's highly recommended. This is the 8J47. Let's observe closely. If you want to shoot, आप ज़रूर ले सकते हैं. मिनिमम आपको 10 गोलियाँ लेनी पड़ेगी, which is one bullet is 65,000 dong. मिनिमम 10 ही है. So yeah, if you wanna go to that thrill, you can definitely go and do it. I'm wearing the unprotected. Highly recommended to have that. See, he is shooting it. Let's zoom in. Oh my god. That's loud. Too loud. Now, I would like to tell you about this one. This is the Viet Cong sandal. You look at the one here. We recycle from that one, okay? Yes, so where we recycle this one, it made from the tire. It's so strong. We can use it for a long time in the jungle. But the different you look at his sandal. It's a little bit different compared to his sandal. You look at this. So can you tell me what is the difference between this sandal and this sandal? So if you look carefully, this is bigger, so this is small, okay? Small here. So you cannot put a feet like this way, okay? You need to turn around, put the feet like this way. You understand? So when you wear like this direction, you step forward, footprint backward. Do you understand what I mean? It creates the wrong footprint. Viet Cong, they make one pair opposite footprint and one pair normal. You see? Why? One pair normal, one pair opposite, two pair normal here, pair opposite here. Why? Because like that they never know. Which direction they went? We can wear this pair, we can wear this pair. US soldier, they know Viet Cong have two pair. But when they see footprint, they don't know which one we wear for them. You understand? अक्ल से काम लिया तभी तो इतनी बड़ी कंट्री को हराया इन लोगों ने. Okay, so now we fight in bunker. You get down, you will see the sniper hole where Viet Cong put the gun shoot enemy. I think you are young, you can go 100 meter. Okay, let's go. Let's go. See you in Cambodia. Damn, this is dark. You see, this is the tapioca. This is peanut, salt, and sugar. Các người ta ơi. Sweet potato? No, tapioca. Tapioca, okay. Sorry. Good? Very good with the. That's really nice. Tapioca. Okay, you want some? No? Yes? Nice. Hot. Dining. Another entrance for
for the tunnel. The time for cooking in late night because when it goes through many chambers, go up to the ground it's so little and the time to the smoke come out it's the same time with early morning time. And then it mixed with the fog enemy hard to see. Oh. Okay. Kitchen it was underground. Everything was underground, but many tourists they cannot go internal to go there. So we need to open all of them. Oh, okay, to the okay. kitchen. Okay. Now the trip in Củ Chi end here. We go to restaurant for lunch. Stay in there, you see some people, the whole sniper hole in there, they can shoot from underground. Air ventilation to breathe. In the tunnel, there are many doors like that. The last vehicle go inside, they will close the door and put the landmine on the door. Americans follow, they see the door closed, they are afraid to open because it may be the landmine behind. This is the place we are gonna have our beautiful lunch, Vietnamese lunch. Yeah, you sit there. Just look at the food. Bathroom, the greenhouse. Yes. Yeah, it's not beer, it's Vietnamese tea. Okay. हमारे वियतनामीज लंच के बाद 2 घंटे की राइड लेके हम आ चुके हैं मेकोंग डेल्टा के टूर पे। यहाँ गाइड हमें समझा रहे हैं कि हम कौन से आइलैंड जाने वाले हैं, वहाँ लोकल विलेजर्स होंगे तो उन्हें टिप कीजिए इफ़ यू लाइक देयर सर्विस एंड लेट्स फॉलो हिम। बोट नंबर 59 सर। Ladies and gentlemen, welcome to Mekong River. Woo! Yay! Our first stop is here where we are going to enjoy the most tropical fruits of this island, जो कि है ये सारे fruits, and ये खाते खाते हम enjoy करने वाले local music. गाने वियतनामीज लैंग्वेज में थे इसलिए समझ तो नहीं आए बट फील बहुत अच्छा आया। और हम टूर के दरमियान जहाँ भी घूम रहे हैं, जो भी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन आवर टूर। इसका रेट आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। The bee over here. This is the bee they have on this island. The bee like this is everywhere around the tropical fruit farm for the people. मैंने पकड़ तो लिया है बट ये सोची थी अगर ये गिर गया और जो तमाशा होगा यहाँ पे, बट लकीली नहीं गिरा। ये मोहतरमा हमारे लिए हनी लेमन टी बना रही है जो कि बहुत ही ऑर्गेनिक हनी है यहाँ। थैंक यू। Cheers. Cheers to Germany. Cheers to India. वियतनाम। और इन्होंने जो मुझे अभी दिया दैट्स रॉयल जेली जो कि सिर्फ क्वीन बी से बनता है and it's very good for your skin. Wow. Gold medal. ये एक्सप्रेशन इसलिए ऐसा आया बिकॉज ही वॉज सो सॉफ्ट एंड डेलिकेट। हाँ वो हैवी बिल्कुल था बट बहुत डेलिकेट था।
They have milk, the main Coconut thing, milk. the coconut candy. Over here, 45 minutes. 45 minutes cook. ये जो कैंडी है इसमें सिर्फ और सिर्फ कोकोनट मिल्क है, बल्कि शुगर भी नहीं है, एंड इट वाज सो गुड. You see it? After that, they wrap it. They wrap the candy. And then my family, this way the local people make it, and they also use it to sell it to the tourists. Chalo chali, my family. चलो चले माय फैमिली. हमारे टूरिस्ट ने हमें कुछ वियतनामीज लैंग्वेज सिखाई, कुछ हमने उसे सिखा दी हिंदी में. Will come out from the flower like this. And what is this? One boat, 4 people. And remember, when you step from here to that boat, you step into the center. Don't step on left side, right side. Because the boat is small. If you turn over, you fall to the water. Xin chào. Xin chào, Vietnam, xin chào. Welcome to Mekong River. Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh. Traffic jam. Traffic jam. Macalong traffic jam. Traffic jam not showing on Google. Xin chào. Xin chào. सो सामने है हमारी बोट में जाते ही हमें कोकोनट वाटर से स्वागत किया गया. एंड फ्रैंकली इफ आई टेल यू, दिस वाज द बेस्ट गाइडेड टूर आई हैव एवर हैड इन माय एंटायर लाइफ, एंड इट्स अ मस्ट tour that you should take, because after this tour I'm more open to Vietnamese food, thought and culture that I was before. So yeah, now the money, it has costed us 3,700 per person for this tour, but it was a memorable one. Kim Travel ने हमें वापस डिस्ट्रिक्ट 1 में छोड़ा, एंड हियर वी आर इन ताज महल रेस्टोरेंट, जहाँ हमने ऑर्डर किया है इंडियन थाली. जी हाँ, इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ बहुत कॉमन है, आपको फॉरेनर्स भी दिख जाएंगे यहाँ खाना खाते हुए, एंड दे आर वेरी हम्बल. ट्रस्ट मी. थैंक यू. दिस इज नेक्स्ट डे एंड ऑल्सो आवर लास्ट डे इन हो ची मिन सिटी. एक लास्ट स्टॉप रह गया था, विच इज़ दिस तान दिन चर्च. इट्स द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल चर्च यू कैन सी. इट्स पिंक इन कलर, आई मीन व्हाई नॉट. यहाँ हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए और सीधा चले गए एयरपोर्ट के लिए, where we had a flight to Da Nang. जी हाँ, आपने सही सुना, लगेज टू डेस्टिनेशन जा रही है दा नांग. एंड यहाँ हमने द मोस्ट लग्जूरियस होटल बुक किया है, जो आप आगे सीरीज़ में देखेंगे. दैट विल बी आवर 3rd एपिसोड. सो स्टे ट्यून फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन, गुड बाय.